So hello students, today we will discuss about heredity, variation and few terms that will be helpful in the understanding of the chapter. So heredity is the transfer of character or traits from parent to the offspring or one generation to the next generation. Variation is the difference of characters from the offspring to the parents or the difference in the characters of the individuals among themselves which belong to the same species, so it is variation. Now how variation arises? So variation arises due to reproduction. There are two types of reproduction, sexual and asexual. Asexual reproडक्शन से जो वेरिएशन होता है वो तभी होता है जब डीएनए की जो कॉपी बनती है सेल डिवीजन के दौरान उसमें कुछ एरर आ जाए, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन अराइज होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ द क्रोमोसोम in the formation of next generation. Or why variation is very important? Because variation is the basis for evolution. जब तक वेरिएशन नहीं होगा तब तक एवोल्यूशन नहीं होगा, एंड वेरिएशन इज very important for the survival of species. Otherwise the species will get extinct in the changed environmental condition. Now characters are transferred through DNA molecule because a certain portion of DNA that code for some special character or some character is called as gene. That gene is present in DNA or on chromosome. I would like to mention here that DNA and chromosome are the same, only difference is that DNA is extended form of chromosome, whereas chromosome is condensed form of DNA. Now on a chromosome several genes are present and each gene is responsible for particular trait or character. Further let's discuss about gene. So I had told you that gene is responsible for transfer of character because it is responsible for the coding of certain characters. So gene is called as the unit of inheritance. It is the smallest unit of inheritance, and allele, a parallel term is used, is allele. What is allele? It is the alternative form of the gene. Alternative form means a gene have different types, so each type is called as allele. So each type of single gene is called as allele. Now the genes may be dominant or recessive. In before discussing these two terms, I would like to discuss that half characters come from male and half character come from female, and both these unite to form the next generation. So half set of chromosome will be from male and half set of chromosome will be from female. In other sense, we can also say that half set of gene will be from the male and half set of gene will be from the female. So for one character there is one pair of gene. एक character के लिए एक pair होगा gene का. Now for example, let's take the example of height. So there may be three possibility or three combination for height: capital T, capital T, capital T, small t, and small t, small t. Now capital and small word is used to indicate the dominant and recessive gene. If in this condition, if you see this, then this condition is different from the first and the third condition. पहले कंडीशन में दोनों जो कैपिटल टी एक साथ हैं और तीसरी कंडीशन में स्मॉल टी एक साथ हैं,
बट जो बीच वाला है कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें जो पेयर हैं वो डिफरेंट हैं। सो पहला और तीसरा, इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस जीन। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, और ये जो सॉरी होमोजाइगस जीन। और ये जो दूसरा है कैटेगरी, ये है हेट्रोजाइगस जीन, बिकॉज इसमें जो जीन्स हैं वो डिफरेंट हैं। और पहले और तीसरे में जीन सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे? होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब सेम। So in heterozygous condition, the gene which is able to express itself is called as dominant gene। और heterozygous condition में जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता जो जीन, उसको हम recessive जीन बोलते हैं। Now, dominant gene is always written in the capital letter. It is written earlier to the recessive gene in heterozygous condition. The last term of the topic is जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। सो किसी एक ऑर्गेनिज्म में ढेर सारे कैरेक्टर होते हैं, तो कई ढेर सारे उसमें जीन होंगे। तो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए उसके अंदर क्या जीन कॉम्बिनेशन है, इसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। और वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कैसा दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। नाउ आई वुड लाइक टू मेंशन दैट कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो जीन कॉम्बिनेशन हो गए और दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ जीन कॉम्बिनेशन है। बट इनका जो फिनोटाइप है वो क्या होगा? सेम होगा। और कैसा होगा? टॉल होगा। सो फिनोटाइप डिपेंड्स ऑन द जीनोटाइप डज नॉट डिपेंड ऑन फिनोटाइप। सो